हर एक आर्ट फॉर्म में कभी कभी ऐसे आर्ट पीसेस रिलीज होते हैं विच नॉट ओनली चेंज द वे यू लुक एट दैट पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म बट ऑल्सो रीडिफाइंस द आर्ट फॉर्म इटसेल्फ. स्टोरी टेलिंग इन अ वीडियो गेम हैज ऑलवेज बिन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द गेम. और अब जाके मैंने अपने 22 साल लंबे गेमर जर्नी में ये फैक्टर की इम्पोर्टेंस सीखी है. जैसा मैंने पहले कहा था, सर्टेन पीसेस ऑफ आर्ट चेंज द मीडियम इटसेल्फ. वेल, अगर वो मीडियम वीडियो गेम्स हो या स्टोरी टेलिंग इन वीडियो गेम्स हो टू बी स्पेसिफिक, देन द लास्ट ऑफ अस इज द मोनालिसा और द गॉडफादर ऑफ वीडियो गेम्स. Trust me, I am not being pretentious, but I 100% believe in the title of this video. Yes, The Last of Us has one of, if not, the best storytelling in a video game. Talk to anyone who has played this game. I can 100% guarantee you ये game उनके top 5 में पक्का आता होगा. I know it certainly does for me. मैं ये वीडियो केवल एक पर्पस के साथ बना रहा हूँ, टू शेयर माई लव फॉर दिस अमेजिंग गेम विद माई फेलो गेमर डूड्स एंड गर्ल्स ऑफ कोर्स. People who have played this masterpiece or are planning on playing it, waiting to experience the best of what video games can offer to us. A game that talks about love, loss, grief, trauma, companionship, survival, violence, and so much more. Alright, let's talk about one of the greatest games ever made. मैंने 12 साल वेट किया है ये गेम खेलने के लिए. जब ये गेम 2013 में रिलीज हुआ था, मैंने इसका YouTube पे गेम प्ले देख के कह दिया था ये गेम तो मुझे खेलना है. मेरे पास तब कोई सिस्टम नहीं था ये गेम खेलने के लिए, और वैसे मिला भी नहीं अगले 10-12 साल तक. विच आई फील परफेक्टली सम्स अप द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इंडियन गेमर्स वॉचिंग गेम प्ले ऑन YouTube and waiting years and years on end to finally play the game. You saw the gameplay when you were a teenager and you finally get to experience the game when you're a full grown adult. The Last of Us मेरा पहला Naughty Dog गेम था. Yes, I never came to the Uncharted party. All I saw from the outside was Nathan Drake doing crazy stuff all the time. ऐसा लग रहा था कोई Phineas and Ferb का एपिसोड चल रहा है. लेकिन The Last of Us Uncharted से बहुत अलग है. I know लोग Naughty Dog का मजाक उड़ाते हैं that they keep reselling and rebranding The Last of Us and keep selling it to their fans again and again for the last 5 years. लेकिन देखो यार, अगर मैं भी Last of Us जितना अच्छा गेम बनाता ना, even I would be reselling that shit, 100%. I wish I got to play the 2013 version of this game which came out on the PlayStation 3 rather than the remade one. लेकिन वो केवल मेरा obsession है पुराने games के साथ. All I hear are stories, urban legends, tales of how phenomenal this game looked for a game released in 2013, that too on a PlayStation 3, कि इस गेम को रीमेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो PS3 में इतना अच्छा दिखता था गेम. लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा, the remake looks phenomenal. Going into The Last of Us, I knew all the major story beats. I mean, come on, गेम को रिलीज होके 12 साल हो चुके हैं. I mean, if you still don't know the story, it's like not knowing what happens in Avengers Infinity War. मुझे सुपर हीरो मूवीज पसंद भी नहीं, but I still know what happens in that movie. But even after knowing ये गेम में क्या होता है, when those major and important story beats took place in front of me, I was stunned by how incredibly well captured those story beats were. And the best example for this is this game's introduction. Joel losing his daughter is one of the most emotional scenes I have seen in video games, and a lot of credit goes to Troy Baker. His acting and also Sarah's make the whole introduction work, because it isn't the most gameplay packed intro. You are just holding the W key or holding the analog stick forward for majority of it. But it's the acting, the direction, the writing and the animation that makes it one of the most iconic introduction in a video game. The Last of Us is set in a zombie post-apocalyptic world, and I have to say, the world is as beautiful as it is scary. और एक तो फास्ट zombies हैं भाई, slow zombies भी नहीं है Resident Evil वालों की तरह. The story takes place 20 years after that traumatic event. You play as Joel along with his partner Tess, but not really a romantic partner. I do not think so. मुझे टेस का कैरेक्टर बहुत पसंद है. She is a total badass. You punch me once, I'll punch you twice type of character. I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Both Joel and Tess live in a QZ, quarantine zone.
क्यूजी एक सेफ जगह है जहाँ पे सारे नॉन इन्फेक्टेड लोग रहते हैं और काम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. बट मैन, द प्रेजेंटेशन, द एटमोस्फियर इन दिस गेम फ्रॉम द स्टार्ट is amazing. The QZ has so much character. It is one of the most dystopian places I have seen in this game. आप तुरंत समझ जाते हो कि QZ उतनी सेफ जगह नहीं है. फेडरा सब कुछ बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है. But despite that, Tess and Joel do their fair share of shady business on the side to get by. और उनका एक पर्टिकुलर शेडी बिजनेस goes wrong, which leads them to meeting Marlene, the leader of the Fireflies. फायरफ्लाइज एक डाइंग रेबल ग्रुप है जो फेडरा के रूल के अगेंस्ट लड़ता है, एंड इट्स लूजिंग द फाइट, माइट आई ऐड, क्वाइट टेरिबली एज वेल. सो मार्लिन आस्क्स जोल टू स्मगल सम कार्गो फॉर हर, एंड लिटिल डिड आई नो दिस पर्टिकुलर कार्गो वुड बी द रीजन व्हाई आई फॉल इन लव विद दिस गेम, एंड दैट कार्गो बीइंग द वन एंड ओनली एली. लेकिन एक कैच है, एली मार्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 14 साल की लड़की is immune and she can be the cure to this virus. और जोल का काम होता है to smuggle her across the country to a lab where the fireflies are working on a cure. I know मैंने बहुत ज़्यादा NCRT के लास्ट पेज जैसी समरी दी है इस गेम की, लेकिन मुझे इस गेम के मेजर स्पॉयलर्स नहीं देने. I don't want to spoil the stuff that makes this game so special. I want people to experience the game for themselves. And if you have played this game, you know exactly where I'm coming from. एसेंशियली दो कैरेक्टर्स जिनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है गो ऑन अ बिग एडवेंचर टुगेदर वेयर दे फेस मेनी एडवर्सरीज एंड थ्रू दैट दे लर्न टू लव एंड केयर फॉर ईच अदर. And what makes this game particularly special is not the if they start caring for each other, but the how they start caring for each other. ये पहला गेम होगा जिसमें मैं कटसीन्स आने का इंतजार कर रहा था और उसका पूरा क्रेडिट इस गेम के डायरेक्शन एंड राइटिंग को जाता है. Each character is so well written and I really want to talk about the characters in this game क्योंकि characters ही इस game को special बनाते हैं. The game has a dual protagonist narrative, Joel and Ellie. Yes, you spend 90% of the game time playing as Joel, but there is enough game time as and with Ellie for you to fall in love with her. Joel is like this middle-aged, super serious, deep voice man. You know, like he's like a real man's man. Think 70s अमिताभ बच्चन. लाइक किसी भी सेकंड जोल बोल सकता है मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. जोल हाई फाई नहीं करता, जोक्स पर नहीं हंसता. He beats the shit out of people and runs them over like he's playing GTA. And just like every other straight man on this planet, he does not know how to handle a compliment. Just saying, it's good having you on my side. That was a compliment. Okay. सबसे सैड पार्ट ये है आप जोल को इस गेम में सबसे हैप्पी गेम के स्टार्ट में देखोगे. इन द रेस्ट ऑफ द गेम यू जस्ट गेट ग्लिम्पसेस ऑफ हिम बीइंग हैप्पी. सो व्हेन ही क्रैक्स अ स्माइल और चकल्स इवन अ लिटिल बिट, बहुत अच्छा लगता है. और इसका बहुत सारा क्रेडिट जाता है टू वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम गाइज आई हैव एवर सीन, ट्रॉय बेकर. This man is in more video games than you will ever play in your entire life. लेकिन फिर भी his performance as Joel and Pagan Min मेरे फेवरेट रहेंगे हमेशा. जोल ऐसा लगेगा कि बहुत रफ एंड टफ गाय है, बट एक्चुअली ही इज वेरी केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव अबाउट द पीपल ही लव्स, एंड यू सी हिज पैटर्नल इंस्टिंक्ट्स किक इन एज ही इज ट्रैवलिंग विद एली. Oh, but don't get it mistaken, he has done his fair share of messed up stuff. I mean, जो बंदा ऐसे इंटेरोगेट कर सकता है लोगों को has seen some messed up shit. Now you're gonna mark it on the map, and it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I ain't lying. I ain't. Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right. I believe him. No, wait! अब वो पर्सनालिटी जो जोल के एकदम पोलर ऑपोजिट है इज एली. Man, I love Ellie so much. She is funny, quirky, has this goofy teenager energy to her. Hey, Ellie, slow down. Wait for me. What? Right here. How about you let me go first and keep your voice down? Okay.
These little interactions makes the characters feel so alive and human, and that is one thing that I really appreciate about this game. Characters एक दूसरे से normal human beings की तरह बात करते हैं, एक दूसरे को interrupt करना, गुस्से में बात करना, इशारों में reply करना. This is how we talk to each other. और ये सब अब दूसरे वीडियो गेम्स ने अब करना सीखा है. Naughty Dog has been doing it since 2013 and probably before that as well. Usually acting in video games works a lot like how acting worked in your school plays or skits. जहाँ आपकी क्लास टीचर अनुराग कश्यप 2.0 एक स्टूडेंट को बोलेंगी कि पहले तुम अपनी लाइन बोलो, फिर दूसरी स्टूडेंट अपनी लाइन बोलेगा और फिर हम लोग लास्ट में कोई तो बेकार सा मॉरल लेसन डाल देंगे. Regicide. Serious stuff. Take it not many know about this. Of the living, only I. And Eredin, of course. Question is, can you get girls to believe you? I mean, maybe I am jealous क्योंकि मुझे कभी स्कूल में एक्टिंग करने का मौका ही नहीं मिला. No, I was too shy in school. That's why. So, as a shy introverted kid, I got the role of playing a tree, which I still play to this day. खैर मैं कह रहा था कि इट्स द फिनोमिनल डायरेक्शन, एक्टिंग, एनिमेशन एंड राइटिंग दैट ब्रिंग्स दीज कैरेक्टर्स टू लाइफ. द रीजन व्हाई सारा's death hits so hard is because she is humanized so beautifully in the start of the game. Now back to Ellie. Ashley Johnson has done an incredible job at portraying Ellie. Even though she was much older than 14 while she was playing Ellie, her voice suits the character so well. आप कितने बार देखते हो कि ओल्डर एक्टर्स को हायर किया जाता है टू प्ले टीनेजर्स और स्टूडेंट्स. Like Amir Khan in 3 Idiots is supposed to be an 18-year-old first-year engineering student here. He looks like he regrets doing engineering and is about to open his startup soon. But the casting of Ellie is perfect. I cannot imagine anyone else playing that character other than Ashley Johnson. I love Ellie. अब हर रिलेशनशिप के तरह जोल एंड एली शेयर हैप्पी, डिफिकल्ट एंड टेंडर मोमेंट्स टुगेदर व्हिच मेक्स देयर बॉन्ड ग्रो स्ट्रॉन्गर. और जब तक गेम का एंड आता है वो दोनों आर इंसेपरेबल. लाइक पॉपकॉर्न एंड मूवीज, यू कांट इमेजिन वन थिंग विदाउट द अदर. जोल एंड एली अपने लंबे डेथ स्टैंडिंग जर्नी में कितने अच्छे इंटरेस्टिंग साइड कैरेक्टर्स से मिलते हैं. हेनरी एंड सैम, टॉमी एंड मेरा पर्सनल फेवरेट बिल. Whole goddamn town's booby trapped. Best stay right on my ass. Can't miss it. Knock it off. The whole Bill and Frank scenario is handled so subtly and beautifully. I love it, man. Also, I love what Ellie represents. A strong female lead which does not need to be sexualized or be reduced to only being the dumb love interest to become a fan favorite. While often movies do a great job at portraying a strong, well-written lead, video games tend to look like they are almost going backwards. That is why I say I love Ellie, Abby, Tess, Marlene, Sadie, Hornet. I love them for what they represent. मैं ये नहीं कह रहा ये सब गलत है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा. Actually, हाँ थोड़ा बहुत कह रहा हूँ. Listen man, I don't care. Call me woke, but I'd really love to see a strong, well-written, strong female lead. That's what I really want to see in a video game. Please. Or I'll do it myself. A lot of you gamer dudes are now upset with me for saying that. So ये लो, Ellie की joke सुनो. I walked into my sister's room and tripped on a bra. It was a booby trap. Ha! Funny. अब मेरी chance. Which coding languages do fishes use? C++. Get it? Get it? Please watch the rest of the video. As I was saying earlier, the post-apocalyptic world of The Last of Us is as beautiful as it is scary. मुझे बहुत अच्छा लगा how the game shows that nature will start reclaiming the planet once humans start to fade away. Plants and animals start to take over abandoned cities. इस game की environmental storytelling is on another level. Got you. Crap, he's fast. Careful Ellie, don't want to run into the Vandalian gang here. ये गेम ऐसे और भी बहुत सारे थीम्स एक्सप्लोर करता है. As you progress in this game, you are going to see some messed up stuff, man, which will make your skin crawl. मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि भले ही दुनिया में zombies होंगे, लेकिन इंसानों को सबसे ज़्यादा खतरा दूसरे इंसानों से है. All the messed up stuff that you see in this game is driven by a want to survive this cruel world. Reminds me of that dialogue from Inglourious Basterds in which Hans Landa says, I know what tremendous feats humans are capable of once they abandon dignity. लेकिन ज़्यादा घबराओ मत, the game isn't all dark and sad. This game also has a lot of its own happy and claiming moments as well.
And plus, Ellie is like a ray of sunshine, brightening up the world by finding beauty in the stuff that you see every day, and sometimes questioning the society's norms as well. I thought you had plenty of food in your time. Oh, we did. Some just chose not to eat it. Why the hell not? For looks. That's stupid. Now, since it is a zombie game, there are quite a few types of infected in this game. वो भी World War Z वाले, यूसेन बोल्ट टाइप भागने वाले zombies. एक तो है स्टैंडर्ड इन्फेक्टेड zombies which are called runners. ये आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे. मान लो कि ये सारे येलो गैंग वाले हैं GTA San Andreas के. Nobody cares about them. And then there are clickers. Man, I hate clickers. They are like the ballas. You have to kill them when you see them. These guys can one-shot you and they're blind, so they use sound to detect you. And man, you gotta love the sound design on them. In fact, their whole design itself is quite fascinating. Then आते हैं bloaters. ये वैसे सबसे खतरनाक इन्फेक्टेड है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सारे बहुत फनी लगते हैं. ऐसा लगता है वो किसी भी सेकंड गिरने वाले हैं. पागलों की तरह दीवारों से लड़ते रहते हैं और सैड सा ग्रेनेड फेंकते हैं अगर आप उनसे बहुत दूर हो जाते हो. हाँ, लेकिन अगर आप उनके ज्यादा पास चले जाओगे तो वो अंडरटेकर वाला फिनिशर भी देते हैं. So be careful. Then there is another type of infected, and these type of infected, I have to say, are my favorite. I won't tell what they are, but man, it is a lot of fun to play against them. वैसे पता है मेरा एक सवाल है. What would you guys do if a zombie apocalypse were to happen? I know what I am doing. I am too stupid. I know I don't stand a chance, especially अगर वो fast भागने वाले zombies होंगे तो. I'll be the guy who stumbles on a rock and gets ripped to shreds. But let me know, what would you do? I'm curious. By now, जिस तरीके से मैंने ये गेम डिस्क्राइब किया है, टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, द थीम्स, द कैरेक्टर्स, द डायरेक्शन, द राइटिंग, यू वुड थिंक इट्स अ मूवी, बट नो, इट इज अ गेम. सो लेट्स टॉक अबाउट द गेम प्ले. अगर आप मुझसे पूछते हो कि आर्यन इस गेम का गेम प्ले कैसा है, इस गेम का गेम प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन स्टोरी जितना अच्छा नहीं है. और वो ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है. इट इज रियली डिफिकल्ट टू लिव अप टू दैट स्टोरी लेवल. बट देयर वर दीज मोमेंट्स इन दिस गेम व्हाइल आई वाज प्लेइंग इट वेयर आई फेल्ट लाइक द गेम प्ले वाज जस्ट फिलर और इंट्रूसिव कंटेंट, breaking the magic of the game's story. Luckily, part 2 already fixes that. Stealth is definitely one of the core aspects of this game's combat, which makes a lot of sense. In every encounter, Joel and Ellie are heavily outnumbered, either by hunters or infected. और अगर आप detect हो जाते हो, you will really have a tough time dealing with your situation, which makes the game feel so much more realistic and high stakes. क्योंकि अगर जोल जॉन विक की तरह सबको मारता रहता तो आपका इमर्जन तो पक्का ही ब्रेक हो जाता है इस गेम से. The combat is so heavy, realistic, boots to the ground. Like take the example of that one armored vehicle which causes Joel and Ellie so many problems. अगर ये गेम Resident Evil होता ना तो Leon already backflip करके सिंघम की तरह वो गाड़ी को उड़ा चुका होता. But don't get it mistaken, the combat is actually a lot of fun. There is enough weapon variety to keep the player engaged. Different pistols, bow and arrows, flamethrowers, shotguns which feel so satisfying to use. Throwables like Molotovs, smoke bombs, and my personal favorite, nail bomb. Sam, Nothing. stay with her. ये लो Someone was catch. up there, but they're long gone. या मुझे ये भी कह देना चाहिए इस गेम का गोर क्रेजी है. At its heart, The Last of Us is a violent game. NPCs' bodies will explode, their limbs will fly off, they will beg for mercy right in front of you if they are the last one alive. Hey, man. Don't do anything stupid, all right? But Joel does not show no mercy. और ये सब अगर देख के आप बोलोगे डैम कि इस गेम का वायलेंस तो बहुत ज़्यादा है, then man, The Last of Us Part 2 is unhinged. That violence is on another level. But of course, all this violence that you see is done for a reason. All of this violence is shown to supplement the reality of the world that these people find themselves living in. It's, you know, survival of the fittest. Kill or be killed. एक और चीज़ जो आप लोग मेरे बारे में जानते हो is that I love little details and The Last of Us is filled with them. देखा? Amazing game. मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे गेम के स्टार्ट में एली कीप्स हर डिस्टेंस फ्रॉम यू, बट एज यू प्रोग्रेस इन द गेम शी गेट्स मोर कंफर्टेबल बीइंग नियर जोल. दैट इज सच अ गुड लिटिल बट अ मीनिंगफुल डिटेल.
ऑल्सो एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आप अपने गन्स अपग्रेड करते हो, मैन आई लव द साउंड डिज़ाइंस एंड एनिमेशंस, इट इज़ सो गुड. The combat of this game is definitely heavily inspired from the Resident Evil games, specifically RE4. जो भी सारे ट्रिक्स आप उस गेम में यूज़ करते हो वो ये गेम में भी चलेंगी. Like I remember this one encounter in which Ellie and David fight off hordes of infected in the quarry, and my head instantly went to the Louis and Leon fighting off zombies in the cabin wala part. If there is something that I am not a huge fan of, it's the Batman games type stealth system of this game. You know, बंदे के पीछे जाके ट्रायंगल बटन दबाना, ये ट्रायंगल दबाना लिटरली 2 सेकंड में बोरिंग हो जाता है. एक्सप्लोरेशन इज़ द अदर मेजर एस्पेक्ट ऑफ द गेम प्ले. एक्सप्लोर करना, सप्लाई स्कैवेंज करना इस गेम में आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. स्कैवेंजिंग अल्कोहल, रैग्स, ब्लेड्स एंड एक्सप्लोजिव्स टू क्राफ्ट नाइव्स, मोलोटॉव्स, नेल बॉम्ब्स, मेड किट्स, द होल थिंग. There is also a skill upgrade system based on scavenging pills, और फिर आप स्क्रैप भी कलेक्ट कर सकते हो अपने वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए on crafting tables that you will find as you progress in this game. Taking your time to find supplies and cracking open safes is more often than not met with a worthy reward, so it's worth going through the trouble. The gameplay heavily relies on exploration. Everything is built around it. लेकिन चलो उसी के बहाने कम से कम आपको इस गेम के सुंदर इंटीरियर्स तो देखने मिलते हैं. और अगर आपको सप्लाईज स्कैवेंज करने में बोर होता है, don't worry, Ellie's jokes will keep it interesting. Shit, you're gonna go in there? I want to see what we can find. You're gonna find my body when I die from a heart attack. इस गेम में पजल्स भी हैं जो एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड है, और मैं अभी कह देता हूँ इस गेम के पजल्स कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, एंड इट्स मेंट टू बी दैट वे. Get on. Really? Ellie. Okay. Be careful. What the hell? ये क्या फायर बॉय वाटर गर्ल वाला पजल है भाई. While playing this game, you will also come across so many Easter eggs, and it feels so rewarding to find them without the help of the internet. Michael, are you in there? Alright, Dwight, let's do the fire drill. इस गेम में इतने सारे मोमेंट्स हैं जिन्हें देख के आप तुरंत बोलोगे हाँ, ये गेम इज मेड बाय द पीपल हु मेड द अनचार्टेड गेम्स. Oh, and by Uncharted, I just remembered an important fact that I forgot to talk about. Nathan Drake, Nolan North, is in this game. Nolan North, the actor who plays Nathan Drake in the Uncharted games, also plays the role of David in this game. And man, I love David's voice. He is so charismatic, and you will not be able to recognize that it's Nathan Drake speaking. Name's David. This here's my friend James. We're from a larger group. Women, children. We're all very, very hungry. इस गेम में इतने सारे अच्छे गेम प्ले सेट पीसेस हैं. लाइक मेरा पर्सनल फेवरेट इज दैट वन हॉरर सेगमेंट इन द होटल. I love that kind of stuff, man. I know earlier it might have sounded like I wasn't a fan of the gameplay. That is not true. I just found the gameplay intrusive at time. That's it. Like one major important story beat of this game just happened, and as the player is taking it all in, absorbing that moment, ha, got you, ye dekh 8-9 log aa gaye, chal inko maar. Like why? There was no need to put gameplay in places where it wasn't necessary. अगर आप ये गेम पहली बार खेल रहे होगे, यू वोंट अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. लेकिन जब आप ये गेम फिर से खेलोगे, दैट्स व्हेन यू विल नो. आई हैव प्लेड दिस गेम 4 times नाउ. तो मैं तो अब ये गेम के गेम प्ले सेक्शंस एक कॉल ऑफ ड्यूटी के कैंपेन मिशंस की तरह खेलता हूँ, जस्ट मोइंग डाउन एनीबडी इन माई वे, एंड ऑल्सो बाय अब्यूजिंग चीट्स, विच इज़ अ लॉट ऑफ फन. दिस गेम इज रिलेटिवली शॉर्ट, 12-15 घंटे का गेम है, बट दोस 12 to 15 hours is filled with a consistently good and an enjoyable experience. The game does not have any boring side content to it. Like अगर कोई side content है भी, जिसको मैं side content मानता नहीं मेरे हिसाब से, is the Left Behind DLC. It is only 2 hours long, but I definitely recommend playing it at least once, especially if you want to understand Ellie's character a lot more. आप कह सकते हो कि ये DLC Ellie के कैरेक्टर की origin story है almost. कुछ लोग ये DLC को वोक ट्रैश बोलते हैं, and I strongly disagree.
It is not a gay romance arc. It's just a romance arc between two humans which happen to be women. And ऐसा तो है नहीं कि Riley and Ellie की पूरी personality is based on them being gay. And the main game already discusses themes like these with Bill and Frank as well. So this pocket of a beautiful thing is happening in this ugly world. Let it happen. I know I already complimented the sound design of this game, but the other thing that I also loved a lot was the music of this series. The music of this series is so good. Composed by Gustavo, I will not say the last name because I will fuck it up. And I genuinely love his work since I watched Brokeback Mountain. And I do not recommend watching that movie. It's a very sad movie. म्यूजिक इतना सिंपल है लेकिन इट फील्स सो इंटीमेट दैट इट एलिवेट्स द इम्पॉर्टेंट स्टोरी बीट्स टू सच अ हायर लेवल. This game is genuinely one of the best games I have ever played. This game perfectly captures what I love about gaming. मुझे gaming क्यों पसंद है, मुझे video games खेलना क्यों पसंद है, या मुझे single player games खेलना क्यों पसंद है, to be precise. And this game, I'm telling you, if you are among the people who are just waiting to play this masterpiece, man, go in with high expectations because this game is not only going to match it, it's going to surpass it. And if you are one of those who survived Ellie's brutal jokes all the way till the end, I want to know what your experience was like with this game. Especially if you were able to play this game on a PlayStation 3, then I am super jealous of you. Neil Druckmann and his team deserve a lot of credit and praise in essentially redefining the industry. And you know what? अब मुझे सारे Uncharted games खेलने का मन है. Now even I am waiting for Intergalactic the Heretic Prophet to release. I am a Naughty Dog fan now. ये game, this fucking game is truly special, and if you haven't played it yet, I really hope you get the chance soon. Till then, as my favorite character likes to say, endure and survive.